Good evening, people. Am I audible to all of you? Is my voice clear? Please let me know. Okay, just let me just make some changes. So people, today I would be taking fill in the blanks because fill in the blanks not only teach you vocabulary, but also if you look at last time we had taken some fill in the blanks of a lower difficulty. These are a slightly higher difficulty fill in the blanks, but the purpose is not to create fear of CUET and IPMAT in your minds, but the idea is to understand if the logic level of the paper is high, then how to quickly adjust to the higher difficulty. So here we have some fill in the blanks questions, and the answers to them are given. We have set. So what we have done is we have this entire book is a collection of fill in the blanks kind of questions. So you have a good number of questions for practice. And once the session is over, I can share this PDF with you. So you can practice these kind of questions, a slightly higher difficulty. But I would say that this is a very, very good way to improve your vocabulary and logical reasoning, as well as fill in the blanks type of questions, because these kind of questions can come in good numbers. Okay, so shall we start, people, and have a good practice of fill in the blanks kind of questions, right? All set? So please take the first question. So we'll quickly take all the questions and then we will look at the answers and we'll discuss all of them. Then model वो A पहले का आंसर क्या है? Yes, people. What is the answer for the first question? Non-violent demonstrations often create such tensions that a community that has constantly refused to dash its injustices is forced to correct them. The injustice can no longer be dashed. Can I say A should be the answer? yes sir. Most of you feel A, right? Okay, so we'll go and take the next question. So we have a set of, I think, 6 questions, and no, it's not 6. We have 7 questions, and after that we have the answers. So we'll take all 7 in one go, and then we will check the answers. So that way we would be able to take more questions. Question number 2. Since 1813, reaction to Jane Austen's novels has oscillated between dash and dash. But in general, later writers have esteemed her works more highly than did most of her literary dash. So we might have done this question because I think I have taken this question either in your class or some other class. B. C? B. Adoration and contemporaries. Okay, adoration and contemporaries. So I will discuss this question once I come later with all the answers. Take the next question. B Okay. Okay. Under ethical guidelines recently adopted by the National Institutes of Health, human genes are to be manipulated only to correct diseases for which dash treatments are unsatisfactory. the alternative Under ethical guidelines recently adopted, human genes are to be manipulated only to correct
Diseases for which dash treatments are unsatisfactory. Similar, most dangerous, uncommon. I think alternative is the only one that makes sense. Let's see once we have the answers. Okay, chalo, fifth and sixth. And the difficulty will increase after every set, I think. So this set would be a easy set, but subsequently all the sets would be little of a higher difficulty than this one. It was her view that the country's problems had been dashed by foreign technocrats, so that to invite them to come back would be counterproductive. Technocrat. Now, technocrats are people who create technology and exacerbated. Now, understand the meaning. Also, I will do the analysis later on. So let me not get into So that. we have done this question earlier. Yes, I think we have done this. Not these questions, but I think some of these we might have done. Take care. Winsor McKay, please take this sixth one. Virtuosity. Okay, virtuosity is the answer. Seventh one. The actual dash of Wilson's position was always dashed by his refusal to compromise after having initially agreed to negotiate a settlement. So B, logic and enhance. The logic of Wilson's position was always enhanced by his refusal. See, refusal to compromise will not enhance the logic. The rigidity might come out. Or maybe the answer to alleviate it. Ho sakta, but logic nahi aana chahiye. Because a refusal to compromise and logic don't go hand in hand. So the actual outcome, the actual uncertainty of Wilson's position was always alleviated by his compromise. The actual uncertainty, okay. The outcome foreshadow. See, understand there is one more meaning to the word betrayed. Betrayed means to show. But look, let's look at all the answers now. So you can note down the answers and then we'll go ahead and take it. Okay. A, B, B, E, D, C, C. So please note down the answers. A, B, B, D, E, D, A, B, B, E, D, and C, C. So these are the answers. So if you have a look at all the questions, I was talking about the word betrayed. Okay, so I talked about this word to you. What is the meaning of the word betrayed? To betray means to show. To betray means to show. So एक betray होता है, one meaning of the word betray is to backstab, to prove disloyal, right? That is one meaning of the word betray. The other meaning of the word betray is to show unwillingly. Just say, for example, she betrayed shyness in our first meeting. So betray basically means ना चाहते हुए भी दिखाना, or to show something. So यहाँ पे क्या है? The actual rigidity of Wilson's position was always betrayed by his refusal to compromise after having initially agreed to negotiate a settlement. So now if you look at every option one by one, you will realize that now option number E पकड़ते हैं. The actual cowardice of Wilson's position was always highlighted by his refusal. So see, cowardice is again, cowardice of your position does not make sense, because cowardice is a, people are cowards. Their positions cannot have cowardice. So cowardly behavior can still make sense because people have behavior. So it does not make sense in the contextual way. The actual uncertainty of, I thought initially that C and D could be the only choices. The actual uncertainty of Wilson's position was always alleviated by his refusal to compromise after having initially agreed to. So this was one point which we thought could have been the answer, the actual uncertainty of Wilson's position. Now,
the point is that if you talk about uncertainty of the position, then his refusal to compromise would not result in uncertainty, it would rather result in rigidity. Because when you refuse to compromise, that means on your specific point, you are very much stubborn. See, that is how we arrive at the answer. I had not done this question before, but when I was solving it, I thought I would go with C more than go with D, though I was not very sure about what logically it means. But when someone is refusing to compromise, that means the position of that guy is very rigid rather than uncertain. Did you understand why I have chosen rigid over uncertainty? Yes or no, everyone? Yes, sir. मुझे भी लॉजिकल नहीं लगा था, of course. The actual outcome of Wilson's position was always enhanced by his refusal to compromise. Again, refusal to compromise will always definitely give rigidity to the person's position. But how come the outcome of his position would be enhanced by his refusal to compromise? Is not very clear. So what happens, people, in the actual exam is the right answer may not be perfectly clear to you, but it will make some sense and more sense than all the other choices. So the actual rigidity, that means stubbornness of someone's position, was betrayed. Betrayed का मतलब यहाँ पे आना बहुत जरूरी है. Many of you have taken the word betrayed in the other way, which we often use, that is to betray or to backstab someone's loyalty, है ना, or trust. But यहाँ पे betrayed का मतलब वो नहीं है. Betrayed means to show. तो क्या बन जाएगा? The actual rigidity of Wilson's position was always shown by his refusal, और ना चाहते हुए भी दिखा देना, by his refusal to compromise. So he was refusing to compromise always, and that showed his actual rigidity. Did you understand, people, how the word betrayed has one more meaning? Okay, clear to all of you? So this can be a tough question, of course, but I will just show you the meaning of the word betrayed in the dictionary. So this is something I came across a long time back. Betray meaning. Okay, so I'll just take you to Google and show you. हाँ, ये देखो, एक मिनट. Do you see this now? Everyone can see the screen. Yes, sir. इसमें क्या लिखा? दो मीनिंग दिए हुए हैं. So the second meaning is known to all of us. To hurt somebody who trusts, है कि नहीं? But the first meaning is known to very few people. To give information about somebody, something to enemy, to make a secret known. ना चाहते हुए भी बता देना, दिखा देना. Did you understand now? So now if you look at this meaning, then this question becomes very clear. सर भाई ये भी तो धोखा देना ही हो गया कि उसको अपनी वो दिखा देना. जैसे सेंटेंस भी अगर हम देखें, she betrayed all the member of the group to the secret police. नहीं, she betrayed to the police है ना, तो है कि नहीं? अगर खाली she betrayed होता तो समझ में आता मेरे को, पुराना वाला मीनिंग समझ में आएगा नहीं? She betrayed all the members of the group to the secret police. So you betray someone to that means basically you have made someone known to someone, ऐसा वाला. Okay, got it, sir. Did you understand? तो ये मीनिंग lesser known मीनिंग है, बहुत लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में. But I had done this in one of the novels में मैंने पढ़ा था, so I could not understand the betray word in the context. So I just went and checked the meaning. So from that I got to know that betray has one more meaning. ठीक है? So मैंने कहा था ना कि she betrayed lack of confidence. So, or you can say not lack of confidence, she betrayed affection for the convict. So betrayed affection मतलब क्या होता है कि भाई the affection was there from deep within, but it was not right to show that in front of everyone. तो एक secret हो गया ना वो. Affection for, let's say, a convict is not something that can be openly expressed. So she betrayed affection for the convict. Now that makes sense because it's a secret that you have made known unwillingly. ठीक है, चलो बढ़िया से. This is this clear to everyone? Winsor McCay was a cartoonist and he could draw with incredible. Now see, understand, people, here we have a contextual test of contextual usage. एक minute. If you look at this question here, it says Winsor McCay, the cartoonist, could draw with incredible dash. So everything looks good. Incredible energy, rapidity, virtuosity. Efficiency nahi aana chahiye, because efficiency and drawing don't go hand in hand. Efficiency is always a word which is used for mechanical performance. Efficiency workers की होती है, machines की होती है, devices की होती है. ये efficiency एक
एक कार्टूनिस्ट की नहीं हो सकती, because cartoonists are more artistic people. So I would not go with this. Sincerity again, sincerity and artistic people. What has, I mean, anyone can be sincere by even doing a very, very ordinary job. So sincerity and incredible dash with the comic strip, they don't go hand in hand. So there is no need for us to use the noun sincerity. Uh, we only can choose virtuosity, rapidity, and energy. So incredible. Now, incredible means unbelievable. So if he's drawing something and it is his unbelievable rapidity, see, his comic strip about Little Nemo was characterized by marvelous craftsmanship and sequence. These are artistic traits. If you're a cartoonist, then you are having marvelous craftsmanship and sequencing. And if you have that, it actually means that you have great artistic quality. So after this colon, now see, understand grammatical usage of colon. Colons are used to primarily explain something that has come before. है ना? So what has come here has been explained by the colon after the colon. So his comic strip was characterized by marvelous craftsmanship and sequencing. And that means that actually we have not rapidity or energy, but virtuosity. Virtuosity का मतलब क्या होता है? Great artistic skill. Great artistic skill. I had also told you that this word could mean different from virtue. Virtuous and by virtue of होता है and virtuosity. So these are all different words. Virtuous means having great moral quality, moral character. By virtue of means because of, that is how we use it. By virtue of my 12th marks, I got admission into one of the best colleges of India. By virtue of my 12th mark, that means because of my 12th marks. And virtuosity is great artistic skill. Okay? So that is how it all becomes clear. So we can take the next question. As I write the words, please make note of them. So this is, as many of you have correctly pointed out, the answer is exacerbate. Exacerbate का मतलब होता है बद से बदतर कर देना. So in Gurgaon, during the monsoon, the usual traffic jam is further exacerbated by waterlogging. बारिश होती है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक जैम तो होता ही होता है नॉर्मल टाइम पे, बट बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग द ट्रैफिक इज फर्दर एक्सैसरबेटेड. ठीक है, ये ध्यान रखना आप, एक्सैसरबेटेड. इन हर व्यू द कंट्रीज प्रॉब्लम्स हैड बीन डैश बाय फॉरेन्स टू technocrats, so that to invite them to come back would be counterproductive. Now understand, counterproductive means unproductive, or rather I would say that अच्छा होना क्या उल्टा खराब हो जाएगा, इसको बोलते हैं counterproductive. It was her view that the country's problems had been dashed by foreign technocrats. So exacerbated हो गया, इसलिए उनको बुलाना unproductive होगा. So the problems had been worsened by these people. That's why calling them would be like, worsening the problem. Now, अगर वो foresee करते हैं, तो उनको बुलाना counterproductive क्यों होगा? See, when you foresee something, means you can see it beforehand. When you attack the problem, that means you are trying to solve the problem. When you are ascertaining the problem, that means you are confirming the problem. When you are analyzing the problem, again, you're not doing anything bad. So in fact, A, B, C, and E, if true, would not make their coming back counterproductive. And that's the reason why the answer is D, which is clear to, I think, all of you, right? If you look at the other questions, I think this was pretty simple. Under ethical guidelines recently adopted by the National Institute of Health, human genes are to be manipulated only to correct disease. So this puts a condition. See, human genes are to be manipulated. आप genes manipulate कब करते हो? देखो, example दे रहा हूं आपको मैं. आप bypass surgery कब कराओगे? किसी की. When you know that all the other options are not possible. So you go for the most difficult and challenging treatment. So genes editing is a very, very difficult, it's very, very undesirable. Because if you work at the genes level, that means you might alter the entire क्या बोलते हैं, framework of the organism. That's why human genes manipulation is something which is not desirable unless all the other possible treatments have been ruled out. So human genes are to be manipulated only to correct diseases for which alternative treatments are unsatisfactory. अब आप बोलोगे सर बाकी क्यों नहीं होगा? बाकी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंस नहीं बनता है. सिमिलर ट्रीटमेंट्स आर अनसेटिस्फैक्टरी. अगर सिमिलर ट्रीटमेंट्स अनसेटिस्फैक्टरी है तो इसको भी करके क्या मिलने वाला है?
अगर सिमिलर ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाए तो ये भी तो सही नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज ये भी सिमिलर ही है. एंड ऑल दोस आर wasteful. Alternative is the right usage. Alternative medicine, homeopathy, ayurveda, naturopathy, all these are alternative medicines in comparison to allopathy and surgery. तो एक राइट वर्ड यूज करने का मार्क्स मिलता है अपने को. ठीक है, everyone is clear about it, people? I hope you are following it. So this is not based on vocabulary but the right word usage. So this is again simple. There are no vegetation types of or ecosystems whose study has been dashed to the extent that, so whose study has been exhausted to the extent that they no longer interest. So both the words are making perfect sense. There are as yet no vegetation type whose study has been exhausted. See, when you exhaust the study of something, there is nothing interesting in it. है कि नहीं? So you have exhausted something to the extent that अब कुछ बचा ही नहीं है. So this is how it makes perfect sense. And in the second case, this could be a little challenging question, but we have to understand the meaning of the word condescension. मैंने आपका एक आपको टेक्निक भी दिया था. Look at the word condescend. So con plus descend. ठीक है? Descend means to come down, or to look down, So when you condescend, or condescension means looking down on, looking down on. ये होता है condescension. So if Jane Austen's novels or reaction to Jane Austen's novels has oscillated between, oscillate का मतलब ये होगा कि if this is the one end, then this is the other end. This is how things oscillate, right? So if there is one end in which you have condescension, then in the other end, you will have the opposite of it. So what can be the opposite of looking down on, admiring? है ना? So adoration is the right word. Dismissal तो नहीं होगा, because dismissal and condescension are the same thing. So how they can oscillate? Disapproval भी वही हो जाता है. Indifference फर्क ही नहीं पड़ता. Again, that is not the opposite. Approbation is approval, but approval is not wholehearted. Approval खाली हाँ ना में होता है. But adoration is always deeper and full of affection and praise. That's why B makes more sense. Are we clear, everyone? सबको समझ में आ गया? Please tell me yes or no. हमने फटाफट किया है. Yes, But I sir. hope you have understood. We should solve more questions rather than unnecessarily, anchor over one or two questions for 1 hour. आगे बढ़े. Yes, sir. Please take set 2 और साथ में डिस्कस करेंगे पूरे सेट को. I think किया हुआ तुम लोगों ने. Please start from here. Just tell me to scroll down. I will scroll it down. सर ये हम पहले भी कर चुके हैं क्या ये पीडीएफ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं. नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट आई थिंक मैंने कराया नहीं है, बिकॉज मैंने शुरू से कुछ कराए थे आप लोगों को. प्लीज ट्राई, बिकॉज ऊपर के सेट्स हो सकता है हो गए. प्लीज ट्राई दिस वन. Just see. Please mark your answers and then we'll discuss all of them in one go. ठीक है? So 22nd, 23 done.
Should I move forward? ट्वेंटी क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है, क्या होगा? Yes, people, employees had become so inured to understand the meaning of the word inured. Inured to means used to. So if I have to mark this, inured, एक minute, sorry.
The net went away. ठीक है? Can you all see me now? Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Net चला, लाइट चली गई. ठीक है. चलो. Yes. What is the answer for the 28th question? Employees had become so inured. Inured का मतलब होता है used to something undesirable. So you might be habituated to lots of good things and bad things. We cannot make out whether the thing was good or bad from the word habituated. So you can say I'm habituated to getting up in the morning, or I'm habituated for to long drives. It can be both good and bad. But when you use the word inured to, इसका मतलब चीज खराब ही है. That means the thing according to is undesirable, right? So employees had become so inured to the caprices. What is the meaning of caprices? Unpredictable nature. इसको बोलते हैं caprice. So if your friend is capricious, इसका मतलब ये है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसका मूड कभी बदल जाएगा, कुछ कह नहीं सकते. Employees had become so inured to the caprices of top management's personal policies that they created the announcement. तो वो इतना used to हो गए थे unpredictability के that the new announcement of companies dress white codes what क्या होगा आंसर क्या होना चाहिए आपको? ये तो बड़ा आसान लग रहा है मेरे को. What should be the answer? Confusion, apprehension, resentment, impassivity, या astonishment? आपके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लोग एक्टिव मेंबर्स होते हैं ना, और कुछ पैसिव होते हैं. यस और नो? तो एक्टिव है जो पार्टिसिपेट करता है, पैसिव क्या है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता. कैन आई से दैट दे वुड बिकम इम्पैसिव at the announcement of this thing because they are used to the caprices of the management? All of you agree that this is the right answer? रिसेंटमेंट तो प्रॉपर्ली गलत तो नहीं होगा. देखो रिसेंटमेंट कब होगा ना, जब ये उसको यूज टू नहीं होगा. आपको एग्जांपल दूं मैं? देखो इट्स एग्जांपल फ्रॉम अ डेली लाइफ. अब पिताजी आते, पापा आते हैं, बच्चे को रोज मारते हैं, रोज मारते हैं. वो पहले दिन तो रोया, दूसरे दिन उसको गुस्सा आया, तीसरे दिन उसको लगा यार क्या ही है, खुद ही बोला और मारो मेरे को. So he has become used to it. I take my point. Yes, sir. You are new to, you become basically unrest. कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदत लग चुकी है. So the caprices of the top management's policies, the employees were inured to it, and therefore when the announcement of a company-wide dress code came, it made no difference to them. So ना ही गुस्सा आया और ना ही सरप्राइज. Because गुस्सा मतलब क्या? देखो resentment. When do you use the word resentment? जब Resentment is गुस्सा आएगा. पर्सनल ग्रज होता है एक्चुअली. अब कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया ड्रेस को, उससे रिसेंटमेंट नहीं आएगा एम्प्लॉयज के अंदर. हाँ हो सकता है एनोयंस आ जाए, मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाए, सरप्राइज आ जाए, बट रिसेंटमेंट इज ऑलवेज ऑन पर्सनल टर्म्स एंड पर्टिकुलरली इमोशनल. तो मुझे लगता है कि रिसेंटमेंट इज डज नॉट मेक सेंस हियर. द ओनली वर्ड दैट एस्टोनिशमेंट होगा नहीं बिकॉज यूज टू हो चुके हैं. कंफ्यूजन का भी स्कोप नहीं है ना यार, बिकॉज यू से दैट दे आर इग्नोर्ड टू इट, दैट मींस इम्पैसिविटी ही उसका आंसर होना चाहिए. ठीक है. What is the answer for the earlier question, 27th one? There has been a tendency among art historians not so much to revise as to eliminate the concept of the Renaissance, to dash not only its uniqueness but its very existence. So भाई एक चीज तो पक्का है, all the positive words will go out. Why the positive words will go out? Because the positive words will go out because they are not trying to revise but to eliminate. So extol means to praise. Okay, to extol the virtues. To extol the virtues of urban life. So when you are writing a RC passage and urban life, he's trying to extol. Extol means to praise. हो गया तो ये तो पक्का नहीं होगा. To regret you regret of a wrongdoing.
And historians are not here engaged in a lot of personal conflict with someone. So again, this is not going to make sense. Explain भी नहीं हो रहा है. Either transmute होगा or what is the meaning of contest? Anyone? Can anyone tell me the meaning of the word contest? Hmm? सर कंपटीशन जैसे कोई करता है. हाँ, contest का मतलब होता है to basically debate. कंटेस्टेंट्स नहीं होते. देखो, एक तो होता है कंटेस्ट अपना मतलब नॉर्मल सेंस में, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्टेस्ट. बट व्हेन यू कॉन्टेस्ट समवेयर, there is not going to be two winners. There are going to be only one winner. There's only one winner. But to contest, eliminate someone. Okay. 27th question done. All of you agree that 27th का answer should be contest. Hmm? नो सर, आपकी आवाज बीच में चली गई. हाँ, अब सही लग रहा है. 27th का आंसर सही है, कंटेस्ट. एक बार वापस समझा दीजिए, आपकी आवाज चली गई. अच्छा, देखो इसमें क्या होगा ना कि कंटेस्ट का मतलब होता है बेसिकली टू फाइट. So can I say they're trying to eliminate, and that's why they are fighting not only its uniqueness but also its very existence. Because they are trying to eliminate, they are fighting not only its uniqueness but also its existence. Yes or no? All the others will go out because they don't make sense in the context. To explain again, if they are eliminating something, so the dash is often used to add something similar. So there has been a tendency among art historians not so much to revise. तो revise तो करना ही नहीं उनको, as to eliminate the concept of the Renaissance. So elimination focus हो रहा है, right? Elimination पर focus हो रहा है. There has been a tendency among art historians not so much to revise as to eliminate the concept of the Renaissance. To, yes, क्या होना चाहिए? To contest not only its uniqueness but its very existence. So to contest means to fight. So this makes perfect sense among all the options. Explain and extol will not make. Transmute is to transform. But the idea here is not to transform. The idea here is to eliminate. Clear everyone? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर. है ना? तो थोड़ा सा
चैलेंजिंग क्वेश्चन था पर बढ़िया क्वेश्चन है ना. दिस इज हाउ यू शुड यूज इट. एविडेंस की बेसिस पे सब कुछ होना चाहिए. ठीक है, एक मिनट प्लीज टेक. इसका आंसर क्या है? एक मिनट. 5 मिनट. हाँ बोलिए. रिजल्ट बताया. ठीक है, हो जाएगा ना. राष्ट्रीय कितना है? अरे हाँ, थोड़ा ऐसी क्लास ले रहा था, थोड़ा जस्ट फिनिश. Okay, clear to all of you now. What would be the answer for this one? Neither the ideas of philosophers nor the practice of ordinary people can by themselves dash reality. What in fact changes reality and kindles revolution is the dash of the two. What is the meaning of the word kindle? Hmm? Anyone? Good boy. To ignite. So you kindle the cigarette. Ignite word सही नहीं है because ignite का तो आग लगाना होता है. To kindle basically means to 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 just trigger something. So you want to kindle your cigarette or kindle the candle, something like this. Neither the ideas of philosophers nor the practices of ordinary people can by themselves dash reality. तो क्या होना चाहिए? See, Can transform reality. Okay. What in fact changes है ना, तो changes के साथ transform match हो जाएगा ना यहाँ पे. Yes or no? यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की बात करना कोई गलत थोड़ी ना होगा. तो कंस्टिट्यूट भी नहीं होगा, अफेक्ट भी नहीं होगा, प्रिजर्व भी नहीं होगा, ऑल्टर हो सकता है बिकॉज ऑल्टर एंड ट्रांसफॉर्म कैन मेक सेंस. कैन आई से वी कैन शॉर्टलिस्ट बोथ सी एंड ई. yes sir. अब मुझे कोई बोल रहा है सर इंटरवेंशन ऑफ द टू. इंटरप्ले सही होगा या इंटरवेंशन सही होगा? बताओ. Intervention. या इंटरप्ले सर होगा? इंटरप्ले. देखो दो चीजों का इंटरवेंशन कैसे हो सकता है? दो चीजों का इंटरप्ले हो सकता है ना. दे बोथ. देखो इंटरप्ले का मतलब क्या होगा, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, मुझे पता नहीं बट आई थिंक इसका आंसर इंटरप्ले होना चाहिए. Intervention is interference. Interplay is basically the coming together of something. क्या सी लग रहा है क्या आंसर? क्या है इसका? हाँ सी दिया हुआ है राइट. समझ में आया कि नहीं? इंटरप्ले ऑफ टू थिंग्स का मतलब क्या है? आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जुगलबंदी कराते हैं. दैट इज इंटरप्ले. आप बोलोगे सर ये इंटरवेंशन क्यों सेंस नहीं बन रहा है? सी द इंटरप्ले ऑफ टू थिंग्स बेसिकली मींस बोथ द थिंग्स आर कमिंग एंड प्लेइंग अ रोल, इसलिए वो इंटरप्ले दिया. वन कम्स द अदर कम्स एंड दे स्टार्ट coming together and they start affecting the whole scenario. समझ में आ रहा है इंटरप्ले का मतलब क्या है? आप बोलते हो इंटरवेंशन. व्हाट इन फैक्ट इंटरवेंशन टू. सी इंटरप्ले में ना एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है. इंटरवेंशन इज जस्ट इंटरफेरेंस. इट मे नॉट हैव एनी active contribution to the entire scenario. Did you understand people ki why interplay is more important for revolutions to happen? कोई चीज के इंटरवेंशन से रिवोल्यूशन नहीं होता. वो तो इंटरवेंशन खाली बस टांग अड़ाने वाली बात हो जाती है. बट जब वो इंटरप्ले करते हैं ना, तब दैट मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द टू थिंग्स एंड दैट्स द रीजन व्हाई इंटरप्ले मेक्स मोर सेंस. डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्ले एंड इंटरवेंशन? यस सर. है ना. इंटरवेंशन बहुत पैसिव होता है. कोविड 19 कोविड 19 से इंटरवेंशन स्पॉइल्ड द करियर ऑफ मेनी पीपल. करेक्ट. क्योंकि वो खाली आके खड़ा हो गया, बीच में अड़ंगा डाल दिया उसने. मैं वहां पे इंटरवेंशन वर्ड यूज करूंगा, मैं कभी इंटरप्ले यूज नहीं करूंगा. और इंटरप्ले का वो क्रिकेट मैचेस में होता है या फुटबॉल मैचेस में. द इंटरप्ले बिटवीन द मिड द सेंटर players and the forward players transform the dynamics of the game. ठीक है, something like this. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो खैर एक ही चीज बना सकता है, that is
some sort of elimination. What do you think is the answer for this question? Many Americans believe that individual initiative epitomized. What is the meaning of the word epitomized? Epitome क्या होता है? Epitome is a perfect example of something, right? So many Americans believe that the individual initiative epitomized the 1890s. का मतलब क्या है? मतलब ये कि 1890s का जो दौर है वो पूरा दौर एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव का था. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट the 1980s company strikes in the 1980s epitomized the Indian textile industry. क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 80s में थी उसमें खाली बस स्ट्राइक्स हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे. So many Americans believe that individual initiative epitomized, symbolized, है ना, symbolized the 1890s. And they see the entrepreneur as the dash of the age. तो कोई चीज को अगर आप symbolize करते हो, तो can I say that epitomized is always used for good purpose because symbolic हो जाता है. The individual initiative is a very positive word, and if it's symbolized, that means what I'm looking for is that it symbolizes see the entrepreneur as the dash of that age. क्या होना चाहिए? Aberration तो नहीं होना चाहिए. Aberration का मतलब क्या होता है? Something abnormal. So if something is epitomizing, that means वो abnormal नहीं माना जाएगा. Throwback pics होते हैं. Salvation is always in religious terms. Caricature means cartoon बनता है लेकिन वो मजाक उड़ाने के लिए होता है. Personification of that age. What is personification? Anyone? What do you mean by personification? Many Americans believe a that. non-living thing as living. हाँ मतलब क्या होता है ना कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है वो 1890s को सिंबलाइज कर रहा था. यानी कि जो एंटरप्रेन्योर था वो बेसिकली सिंबल बन गया था उस एज का. सो द एंटरप्रेन्योर वाज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट एज. अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? दैट एज मींस दैट टाइम. इफ आई हैव टू यूज that what was how was that time symbolized in society, so you can say the entrepreneur was the symbol of that time frame. Symbol का मतलब क्या है कि if that age is to be given a certain human name, then I would give that name of an entrepreneur. Did you understand, people, how the word personification perfectly blends with the entire sentence? कोई भी एज का चेहरा तो नहीं होता ना, लेकिन अगर उस एज को मुझे चेहरा देना है तो कैन आई से आई एम पर्सोनिफाइंग दैट एज. Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि द एंटरप्रेन्योर बिकेम द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट एज. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल इनिशिएटिव वाज एपिटमाइज्ड. यानी कि कोई भी देखो जिसको देखो वो मतलब बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर रहा है. तो आज से 20 साल बाद लोग बोलेंगे कि फ्रॉम 2015 और टू 2025 2015 2025 was the age of was the age of startup in India, and technology graduate epitomized that decade or personified that decade. That is more appropriate. Did you understand everyone why person? बाकी कोई का Why salvation was about it? salvation is देखो salvation क्या होता है पता है? मुक्ति होती है वो. इंडिविजुअल किसी डेंजर से बाहर निकालने को बोलते हैं ना salvation. हाँ salvation danger से प्लस क्या होता है? salvation sacrifice, sacrifice in the sense that you want to basically achieve certain sort of religious freedom. अगर आप मुझे बोलते हो सर कि many Americans believe that individual initiative epitomized the 1890s and see the entrepreneur. अगर मुझे entrepreneur को salvation देना है तो मुझको अजीब सा लग रहा है. I would say that अगर मेरे को and see the monk और let's say the साधु, समझ में आए कि नहीं, और गुरु, मतलब ऐसा कुछ तो है. प्लस salvation is not making sense here. So मतलब लेकिन वैसे जरूरी तो नहीं है ना कि salvation हमेशा spiritual way में ही यूज, क्योंकि उसके मुझे दो ही पता मतलब है, होते हैं. मुझे है ना क्या लगता है ना कि salvation अगर मैं फिट करना चाहूँ ना यहाँ पर तो I'm not able to make sense of it. जैसे कि entrepreneur can personify a certain age, but if I see the entrepreneur as a salvation of that age, that means you know यस सर, मैं आपकी salvation. बात समझ गया कि वो ठीक है, लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जरूरी तो नहीं है ना कि अपना salvation हमेशा spiritual way में ही यूज हो. Not necessarily. Yes. पता है कि salvation करना होगा, मैं कहता हाईएस्ट अचीवमेंट ऐसा कुछ तो हो सकता है, something like this.
बट आई यूज सैल्वेशन इन द सेंस दैट जैसे मैं अगर जो यूज करता हूँ तो मैं जनरली उसको यूज किया हूँ कि सम सॉर्ट ऑफ मतलब अगर कोई मतलब लिटरली तो यही सैल्वेशन था कि भी मुक्ति मिल गई इस बंदे को। बट अगर कोई ऐसा यूज करता है कि नहीं, सपोज आई डोंट वांट टू यूज सैल्वेशन इन द लिटरल टर्म्स बट इन अ मोर फिगरेटिव वे, देन व्हाट वुड आई मीन बाय द वर्ड सैल्वेशन। बट यहाँ पे ना सैल्वेशन, हाँ मतलब अभी इसका यूसेज तो खैर ऐसा बहुत देखा नहीं है, तो इट वुड बी पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है ना कि इट सिंपली मीन्स दैट यू आर सिंबलाइजिंग समथिंग। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये तो हो गया। आई थिंक दिस इज इजी। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? There is something dash about the way monasteries about sorry, there is something dash about the way so there is something dash about the way the building of monasteries proliferated. What is proliferated? Anyone? इसका मतलब क्या है proliferated का? Multiplied. हाँ, multiplied or sprung everywhere or spread everywhere. There is something dash about the बोल दो दूर से, जा रही है। There is something dash about the way the building of monasteries proliferated in the 18th century Bavaria, while the rest of the Western world, while in the rest of the Western world, religious order was dash at church. देखो, when you look at the word while, it is showing contrast. The word while and the word whereas, they can both show contrast. ठीक है? So now, if there is a contrast, then there has to be something more into it, right? There is something dash about the way the building of monasteries proliferated in 18th century Bavaria. While in the rest of Western world, religious order was dash and church building was consequently declining. तो church building अगर decline हो रहा था तो religious order क्या हो रहा होगा? Diminishing होता है ना, या dissipating भी हो सकता है? Yes or no? Order means enthusiasm. So if enthusiasm is dissipating or diminishing, then church building definitely will decline because your enthusiasm for religion is going down. So the building of the temples and churches will go down. So only two things that make sense here is dissipating and diminishing. Coalesce का मतलब होता है इकट्ठा हो. So coalescing is not going to make sense. Are you getting my point, people? Yes, sir. तो can I say incongruous Sir? सही लग रहा है? सर डिसिपेटिंग का क्या मतलब है? Dissipate का मतलब होता है वो हो जाना, स्कैटर हो जाना। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन पूरा दिन यूज करते रहते हो ना, तो दैट एक्चुअली किल्स योर एनर्जी बिकॉज इट टेक्स एनर्जी। ऐसा नहीं है कि वो बिना कुछ मतलब एनर्जी स्पेंड किए आप स्मार्टफोन पर बैठे रहते हो। So some of your teachers might say that the biggest cause of dissipation of energy is use of tablets and smartphones. Incongruous का मतलब पता था आपको? congruent triangles होते हैं, तो incongruous basically is something which is difficult to understand. सो इनकॉन्ग्रुअस क्यों है? क्योंकि 18th सेंचुरी बवेरिया में बिल्डिंग्स प्रोलिफरेट हो रहे हैं और वेस्टर्न यहाँ पे वहां पर डिमिनिशिंग हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है, यहाँ पे डिमिनिशिंग हो रहा है, इनकॉन्ग्रुअस हो गया, है ना? इम्यूटेबल का तो कोई सेंस नहीं बनता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्यूटेबल? एनीवन? एनिग्मेटिक क्या होता है, कोएलस क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, मोमेंटस क्या होता है? ऑल द मीनिंग्स यू नो, राइट? व्हाट इज एनिग्मेटिक? एनीवन? जो समझा ना जा सके डिफिकल्ट टू सारे इसमें। अंडरस्टैंड। Something that is difficult to understand is enigmatic. Very nice. So enigmatic, yes, enigmatic is something difficult to understand. बहुत बढ़िया। आगे क्या होगा? What is coalescing? To coalesce means जुड़ जाना. So the word co means to come together. So coalesce means to stick. Immutable, mutation. Don't go by the word They not mute. be changed. जो म्यूटेट नहीं होता, म्यूटेट का मतलब चेंज होता है ना, म्यूटेशन होता है ना, हमारी जीन्स में जो म्यूटेशन होते हैं तो हमको नई प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक म्यूटेशन हुआ था हमारी जीन्स में करीबन आज से 80,000 या 1 लाख साल पहले, तो उससे क्या हुआ कि हमारी स्पीच डेवलप हो गई।
So human beings were there on earth even before we were the same 81 lakh years ago as well. But around 80,000 years ago, there was some mutation in the genes, and because of which we developed speech, and that became the very tool through which we then further uh, became. ठीक है, तो immutable हो गया. Incongruous, congruent triangle. Incongruent means not matching. Momentous means of great significance. इसका आंसर क्या लग रहा है? इसका आंसर क्या लग सर रहा है? डी 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 लग रहा है सबको? हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया इसलिए because they had various meanings in 19th century biological thought mechanism, because they had various meanings. अब दे किसको रेफर कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या हुआ ना, ग्रामेटिकली दे जो है ना, ये उसको रेफर करेगा जो उसके बाद में आएगा, है ना? Because they had various meanings in 19th century biological thought, mechanism and vitalism ought not to be considered dash terms. सर इसमें यूनिवोकल भी तो आ सकता है, नॉट टू बी कंसिडर्ड अब यूनिवोकल यहाँ पे तो टर्म। ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा गड़बड़ आपको थोड़ा सा वो बना देगा. Because they had various meanings, they ought not to be considered dash terms. तो अगर वेरियस मीनिंग होंगे तो आप उनको कैसा समझोगे? आपको लगेगा कि ये जो है, बिकॉज दे हैड वेरियस मीनिंग्स इन 19th सेंचुरी. वेरियस का मतलब क्या होता है? बहुत सारी मीनिंग, है ना? सर मल्टीफेसेटेड शायद हो सकता है. हाँ हाँ, वेरियस मीनिंग्स होगा तभी तो मल्टीफेसेड होगा ना. इसलिए ऑथर बोलता है कि क्योंकि उनके बहुत सारे मीनिंग्स थे, उनको आप मल्टीफेसेड मत समझो. बट ये भी गड़बड़ हो सकता है ना. इट्स सो डिफिकल्ट. इंटरेक्टेबल. एक मिनट. Thus, I find the recent insistence that the terms had single definitions to be entirely. अच्छा, तो ये सिंगल डेफिनेशन की बात कर रहा है ना, और यहाँ पे 10 यूज कर रहा है. तो सिमिलर आना चाहिए। सिमिलर आना चाहिए ना. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बिकॉज दे हैड वेरियस मीनिंग्स इन 19th century biological thought, they are not to be considered dash terms. बट बहुत सारे मीनिंग्स होंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगा, तो ये तो बाहर चला जाएगा. ये मेरे को वैपिड का मतलब समझ नहीं आ रहा. व्हाई शुड दे यूज द वर्ड वैपिड? वैपिड क्या होता है? वैपिड इज टायर्ड एंड लेजी. दैट डज नॉट मेक मच सेंस. वैपिड, हाँ, लैंड है. Congruent ought not to be considered congruent terms because they had various meanings. Why would I take it as congruent? Univocal हो सकता है because they had various meanings in 19th century biological thought. Mechanism, vitalism ought not to be considered univocal terms. Thus, I find this ये डिफिकल्ट लग रहा है मुझे. लेट मी सी द आंसर. यूनिवोकल हो सकता है बट सर इसका ए सही बैठ रहा है, एरोनियस को मुझे वही लग रहा है. मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ए, ये बोल रहा है CDA है ना. देखना ए, पड़ेगा क्या है ना. कहाँ गया रे यार? कहाँ गया? ऊपर है क्या नीचे है? सी डी ए है। ए है क्या? हाँ. और तो मुझे समझ में नहीं लग रहा था कि सॉरी, ये तो हो गया. तो इसका तो सी है, इसका डी है. ठीक है, ये तो उसका पढ़ने कर लिया. तो सी फर्स्ट का तो सी होगा ना. Although providing wild chimpanzees with food makes them less shy and easier to study, it is also known to dash their normal social patterns. तो although क्यों आप यूज कर रहे हो? क्योंकि contrast होने वाला है ना. Providing wild chimpanzees with food makes them less shy. That is the good thing about it. And because they are less shy, they might become easier to study. But it is also known to dash there. So ये सही है ना? Everyone understands why C is the right answer. It's a very यस very सर, simple पॉइस का question. क्या मतलब है? किसका किसका? पॉइस डी में जो है डी। अच्छा, poised. Poised का मतलब क्या होता है? पोजिशन.
India is poised for a great win against Pakistan. अब देखो इसका यूसेज कैसे होता है. इसका यूसेज होता है बेसिकली जो खड़े रहने का तरीका. इसलिए वहां से बोलते हैं क्या पोज दी है ना. अब पॉइज और पोज में ये फर्क है कि जो पोज होता है ना वो आप देते हो फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी निकालने के लिए आप पोज देते हो ना. लेकिन पॉइज जो होता है ना वो आपका एक इनवॉलेंट्री सेल्फ कॉन्फिडेंस है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है और आप स्टेज पे जाते हो स्पीच देने के लिए, तो आपका जो खड़ा होने का तरीका होगा ना वो अलग होगा इन कंपैरिजन टू someone who is low in confidence and does not want to look at the audience face to face. So the poise of the first person who is full of confidence would be different from the poise of the second person. यहाँ पे poise का मतलब है खड़े होने का तरीका, और poise का मतलब क्या होता है, positioned. Did you understand now how the words are used differently in different context? ठीक है. अब जब मैं इस पे आता हूं ना तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और आंसर बनेगा भी नहीं. क्योंकि व्हेन आई लुक एट दिस व्हेन आई लुक एट दिस क्वेश्चन हियर, मुझे हर जगह प्रॉब्लम होती है. कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, बिकॉज सस्पेक्ट और वैपिड दोनों समझ में नहीं आता मेरे को. इंट्रैक्टेबल फर्स्ट ब्लैंक में सेंस नहीं बनता. ऑप्टियूज तो मतलब बेवकूफ होता है, बट इंट्रैक्टेबल मतलब डिफिकल्ट टू कंट्रोल. So all the words either got because one or the other blank is not making sense. तो मुझे घूम फिर के ए पे आना पड़ता है. तो आई डोंट नो हाउ ए मेक सेंस, बट एक सेंस सर इसलिए बन बट रहा है. ये पूरा अच्छे से सेंस बना रहा है मेरे हिसाब से कि अगर वो कहना चाह रहा है कि पहले के क्या होते थे, उनके वेरियस मीनिंग थे, इसलिए उनको दो टर्म कंसिडर नहीं किया जाता था. पर अब क्या है, जैसे उनकी सिंगल डेफिनेशन है तो वो एंटायरली वो एरोनियस है, मतलब हाँ रॉन्ग नहीं, है. वो मैं समझा. मैंने पता है उसको कैसे इंटरप्रेट किया एक्चुअली. Because they had various meanings in 19th century biological thought, mechanism and vitalism ought not to be considered different terms. बस मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे मीनिंग थे. इसका मतलब ये नहीं कि वो दो अलग अलग वर्ड थे. मैंने इस तरह उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लिया. हाँ मतलब पहले वही, फिर पर वो ये है कि वो कहना चाह रहा है कि हाँ वो हम्म, थे ही डिफरेंट टर्म्स. हाँ तो हो सकता है वो अलग सेंस से बोल रहा होगा कि बिकॉज दे हैड वेरियस मीनिंग्स, बहुत सारे मीनिंग थे, वी शुड नॉट कंसिडर देम यूनिवोकल टर्म्स. बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि यही सही लग रहा है, बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है. समझ में आया कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू मार्क द आंसर्स? कई बार क्या होता है ना कि जो सही चीज है ना वो आपको बहुत क्लिक भी नहीं करेगी, लेकिन आपको लगता है बाकियों से बेटर है ये. तो बहुत फोर्स करना अपने आप को समझने के लिए, दैट ऑल्सो कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, है कि नहीं? सर थोड़े यार, नहीं नहीं यार ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को. सो इट्स बेटर दैट वी सर शुड टेक. किसका? सिक्स सेंस लानी पड़ेगी. हाँ मैं तो यही बहुत बार यूज भी करता हूँ, सही बताऊँ तो. एज अ टीचर आई मीन व्हेन पीपल कम विद डाउट्स आई हैव टू गिव द आंसर. तो मैं पढ़ता हूँ तो मेरा सिक्स सेंस एकदम यूज कर. सिक्स सेंस का मतलब ये नहीं कि वो सिक्स सेंस प्योरली है. I mean, it's wrong to say it is a sixth sense. It's basically some sort of smart, intelligent elimination मैं करता हूँ कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो मेरे को लगता है ऐसे, मुझे लगा यार प्रॉब्लमेटिक सेंस नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट सेंस नहीं, मतलब जैसे मल्टी फेस्टेड था. बट मुझे वैपिड सेंस नहीं मिला, मतलब वैपिड नहीं आएगा वहां पर. ऐसा करके मैं एक एक को काटते जा रहा हूँ. फिर जब मेरे पास बचता है एक ही, मुझे लगता भी नहीं कि यार वो क्या मतलब है उसका, बट आई फील इन कंपेरिजन टू दिस कैन ओनली मेक सेंस. ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. अच्छे क्वेश्चंस है नहीं, मतलब एटलीस्ट सिमिलर टू व्हाट माइट कम इन द एग्जाम. एक और सेट कर ले या होमवर्क करोगे? सर होमवर्क कर लें. देखो इसमें बहुत सारे सेट्स हैं, जबरदस्त है एकदम. आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट देयर इज नो एंड टू इट. आई मीन कहाँ तक जा रहा है भगवान. 45 कहाँ तक गया है ये? 247, 309, कहाँ तक? 364 क्वेश्चन है. वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे, लेकिन मैंने सब नहीं कराए थे, बट ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गए हैं. तो अगर आप चाहो तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एटलीस्ट यू विल फाइंड समथिंग सिमिलर इन दिस एग्जाम. समथिंग सिमिलर मतलब एब्सोल्युटली सिमिलर नहीं है, बट समथिंग सिमिलर है. विल आई शेयर? शेयर कर लूं क्या मैं?
Yes, sir. Please share. हाँ तो इसको सॉल्व करो बैठ के, पूरा रोज सॉल्व करते रहो, ताकि वो है ना एक प्रेडिक्शन आ जाएगा। देखो एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में वैसे ही नहीं बनेगा, बट यू कैन ऑलवेज यूज सर्टेन ब्लैंक एंड सर्टेन। जैसे कई बार क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आईपीमैट में क्या होता है कि कुछ कुछ यहाँ पे क्लू आएगा तो इससे ये बन जाएगा, तो उस हिसाब का आंसर बन जाएगा, आपको ये दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। वो हमेशा यूज करना, देखो ऑलवेज यूज योर ऑप्शंस टू योर एडवांटेज। क्विकनेस भी रहेगी, प्लस क्या होगा ना कि आंसर्स काफी हद तक राइट भी बनेंगे। आई विल शेयर दिस विथ यू सो दैट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। और फिर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं सोच रहा था कि मैं फिगर ऑफ स्पीच कराता हूँ, बिकॉज सीयूटी में फिगर ऑफ स्पीच आने वाला है। सर कब होगी नेक्स्ट क्लास? संडे होगी शाम को, इसी टाइम पे ओके कराऊंगा। सर, ठीक है सर, करवा देना। मैं सोच रहा हूँ करवा देता हूँ, बिकॉज फिगर ऑफ स्पीच अगर आ गया मान लो मिस कर लिया तो आपके फिर बाकी सब तो क्वेश्चन इजी है, बट फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम का डेट क्या है सीयूटी का? 1st से 30th में. 21 से 30 में, मतलब उसी के बीच में आपका डेट आ जाएगा ना? And there is a सर reserve date of 1 to 7 June. ओके सो देर इज ओके, अलग अलग डेट्स का अलग अलग टाइम है। ओके ओके, सीयूटी जिस तरह से लास्ट ईयर आया था ना, आई फील आई मीन इट इज जस्ट अ गेम ऑफ स्पीड। इसका तो कुछ काम ही नहीं है यार उसमें, बट स्टिल यू नेवर नो। ठीक है, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन दिस पीडीएफ एज वेल। ठीक है, चलो बाय। नेक्स्ट क्लास कब हो गया? संडे को 5 बजे। ओके सर। चलो बाय बाय, ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बाय।